हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिफ्टेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इंजीनियर इमरान अजीज है और मैं आपको अपने चैनल सिफ्टेक सिंप्लीफाइड पे खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सर्वेइंग एंड लेवलिंग स्पेशली डिजाइन फॉर एसएससी जेई एग्जाम एमसीक्यूज पार्ट 2 की, जिसमें हम 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे। याद रहे पिछली वीडियो में हमने आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स शेयर किए थे। आई होप उस वीडियो ने आपको हेल्प आउट किया होगा और आपकी एक बेसिस डेवलप हो चुकी है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो, जहां पे हम आज से हर वीडियो में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे। उनके करेक्ट आंसर्स हाइलाइटेड होंगे so that you could review them effectively at later stages. These questions has been designed specially for those engineers who are preparing for GAT exam or SSC JE RRB FPSC exam. So let me share my screen, जहां पे एक प्रेजेंटेशन के जरिए आपको फर्दर क्वेश्चंस के बारे में ब्रीफ किया जाएगा। अगर आपने अभी तक सिफ्टेक सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब सिफ्टेक सिंप्लीफाइड एट यूट्यूब। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी अपनी कम्युनिटी में करें। सिविल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 10, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट इन प्लेन सर्वेइंग द कर्वेचर ऑफ Earth is taken into consideration. Option B, the curvature of Earth is not taken into consideration. Option C, the surveys extend over small area. The surveys extend over larger area. So plane surveying में curvature of Earth को हम कंसिडर नहीं करते, बल्कि उसको इग्नोर करते हैं और सर्वेज जो है वो एक स्मॉलर एरिया पे मुश्तमिल होते हैं। लार्जर एरिया के लिए प्लेन सर्वे नहीं किया जाता। सो बी एंड सी हियर आर द करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इन जियोडेटिक सर्वे द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन into consideration. Option A is agreed, option B is disagreed. Yes, geodetic survey के अंदर आपने curvature of earth को consider करना है, वहां पे ignore नहीं करना। So A here is the correct option for this question. Question number 3, the curvature of earth is taken into consideration if the limit of survey is option A 50 to 100 kilometer square, option B 100 to 200 square kilometer, C 200 to 250 square kilometer, and D more than 250 square kilometer. So curvature of earth is taken into consideration if the limit of survey is more than 250 square kilometers. So D here is the correct option for this question. Question number 4, the difference in length between the arc and the subtended chord on the surface of the earth for a distance of 18.2 kilometer is only option A 10 mm, option B 30 mm, option C 50 mm, and option D 100 mm. Difference in length between arc and the subtended chord on the surface of earth for a distance of 18.2 kilometer is only 10 mm. So A is the correct option for this question. Question number 5, in order to determine the natural features such as valley, river, lakes, etc., the surveying performed is option A city surveying, option B location surveying, option C cadastral surveying, option D topographic surveying. So D here is the correct option. ये जो अर्थ के फीचर्स होते हैं, वैली, रिवर, लेक, माउंटेन, इन सब को सर्वे करने के लिए टोपोग्राफिकल सर्वे यूज होता है। So D here is the correct option. Question number 6, which of the following instrument is most commonly used for measuring horizontal and vertical angles in a primary traversing survey? Option A dumpy level, option B planimeter, option C theodolite, option D through compass. So the instrument which is most commonly used in traversing survey is theodolite. So C is the correct option for this question. The reconnaissance surveying is carried out to determine the artificial features such as roads, railways, canals, buildings, etc. Option A true, option B false. So it is false. रिकॉनेसेंस सर्वे में ये आर्टिफिशियल फीचर्स फाइंड आउट नहीं किए जाते। सो फॉल्स जो है यहाँ पे बी ऑप्शन है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। द सर्वेइंग यूज्ड टू डिटरमिन एडिशनल फीचर्स सच एज बाउंड्रीज ऑफ फील्ड इज कॉल्ड option A city surveying, option B location surveying, option C cadastral surveying, option D topographical surveying. So surveying used for additional details such as boundary walls etc. of the field is called cadastral surveying. So C जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। Question number 9, the fundamental principle of surveying is to work from option A whole to part, option B part to whole, option C lower level to higher level, option D higher level to lower level. तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन जरूर आता है। The fundamental principle of surveying is to work from whole to part. So A is the correct option for this question. Question number 10, the working from whole to part is done in surveying in order to ensure that option A survey work is completed more quickly, option B number of errors is minimized, option C plotting is done more quickly, option D errors and mistakes of one portion do not affect the remaining portion. So D here is the correct option.
होल टू पार्ट में जब आपने सर्वे करना है, सो आपने अगर एक प्लॉट की या एक एरिया की सर्वे मुकम्मल कर ली है, सो दूसरा उससे इफेक्ट नहीं होता। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एरर्स एंड मिस्टेक्स ऑफ वन पोर्शन डू नॉट अफेक्ट द रिमेनिंग पोर्शन। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट आवर पार्ट 1 इन सर्वेइंग एंड लेवलिंग, जिसमें हमने 10 एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए, स्टार्टिंग फ्रॉम एमसीक्यूज नंबर 1 to 10। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पे फर्दर 10 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आई होप इन क्वेश्चंस में आपको हेल्प आउट किया जाएगा। ये क्वेश्चन स्पेशली हमने डिजाइन किए हैं फॉर गेट एग्जाम इंजीनियर्स हु आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर द गेट एग्जाम और एसएससी जेईई एग्जाम के लिए। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।